हेलो एवरीवन, वेलकम टू SMEmitra। आज हमारे साथ जुड़े हैं गौरव गुप्ता साहब, जो है CFO रॉकिंग डील्स के, एंड फाउंडर प्रमोटर MD युवराज, ऑल्सो नोन एज अमनप्रीत साहब। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। टू स्टार्ट विथ, क्या Thank you हम so much for having us over. Thank you. या क्या हम आप हमको जर्नी के बारे में बताएंगे? ये कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, क्या थॉट प्रोसेस थी, और आज तक की जर्नी कैसे रही? So हम लोगों ने काम चालू किया था 2005 with the regular business of retail and distribution of top brands of India. Top brands में telecom brands आ गए, हम लोगों ने सबके distributions किए. But at that time we realized that this is not a long-term kind of a business, which is इसमें कोई value add नहीं है. Because it was clearly a retail or a distribution business कि हम 4% 5% पे brands के लिए distribution कर रहे हैं. So that time because I studied in England and I went to the US many a times. I understood the category, which was a refurbished category, something like a circular economy. उस टाइम पे हम लोगों ने फिर दो चार ब्रांड्स के साथ टाइप किया. हम लोगों ने फ्लिपकार्ट और काफ़ी पोर्टल्स का टाइप किया to start buying their customer return products. And gradually we saw a lot of good traction, and we are the oldest and the largest players in the country doing this grading and selling these kind of products. बिल्कुल। तो आई मीन यस, ई कॉमर्स काफी कॉमन है, बट आपका जो बिजनेस है पर्टिकुलरली वो काफी यूनिक है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग द बिजनेस स्ट्रक्चर। सर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताएंगे? कौन सी सिस्टर कंपनीज है, कौन सी सब्सिडरीज है, हाउ हाउ डज दैट वर्क एज अ स्ट्रक्चर? Gaurav, could you help us here? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वाइज हमारी मेनली तीन कंपनीज हैं। ये जो रॉकिंग डील सर्कुलर इकॉनमी है, आईपीओ के साथ आ रही है, ये B2B आर्म है। पूरा सोर्सिंग, ग्रेडिंग और B2B इसमें होता है। इसके अलावा हमारी दो कंपनीज हैं, एक B2C आर्म है जो रिटेल स्टोर्स चलाती है, एक ई कॉम आर्म है जो एक और कंपनी है जो ई कॉम बिजनेस देखती है। तीनों कंपनीज में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइडेंस के लिए हमने एग्रीमेंट साइन कर रखा है। आर्म्स लेंथ पे आपस में डील करते हैं। आइडिया था कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वाइज उनको इंडिपेंडेंट रखा गया, क्योंकि तीनों बिजनेसेस के अलग अलग इकोनॉमिक्स, अलग अलग रिस्क कंसर्न्स है, इसलिए उनको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में तीन अलग अलग कंपनीज में रखा गया। सो सर, लाइक आपकी जैसे स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो कंपनी आईपीओ लॉन्च कर रहा है उसकी शेयर होल्डिंग दोनों में नहीं है, लाइक प्रोमोटर आर सेम, दीस थ्री आर लाइक इंडिपेंडेंट कंपनीज। जी। ओके। एंड सर, यस सर। जी हाँ, कोई क्रॉस होल्डिंग नहीं है, कॉमन प्रमोटर। ओके। एंड सर, आपका फाइनेंशियल्स में देख रहा था 2022 से 23 आपका फाइनेंस टॉप लाइन कांस्टेंट है एंड बॉटम लाइन इंक्रीज हुआ है, एंड लास्ट क्वार्टर में आपका काफी सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। सो ये सस्टेनेबल है या इट्स जस्ट वन ऑफ केस? ये सस्टेनेबल है। मैं थोड़ा और जर्नी में पीछे लेके जाता हूँ। हमने 21 में 10 करोड़ किया ब्रेक इवन के साथ। 22 में हमने टॉप लाइन पे फोकस किया, 10 करोड़ से बढ़कर वो 15 करोड़ हुआ, स्लाइट प्रॉफिट किया। नेक्स्ट ईयर 23 में हमने बॉटम लाइन पे फोकस किया कि हमें कौन कौन से ब्रांड्स करने हैं, कौन कौन सी कैटेगरी करनी है। तो टॉप लाइन तो फ्लैटिश रहा, पर बॉटम लाइन में आपको जंप दिखेगा। नाउ FY24 में हम दोनों को बढ़ाने के लिए रेडी हैं, इसीलिए हम पैसा भी रेज कर रहे हैं कि अब हमें सॉर्टेड है कि कौन से ब्रांड करना है, कौन सा कैटेगरी करना है, सेल्स मिक्स क्या होगा, टॉप लाइन कैसे बढ़ेगा, बॉटम लाइन कैसे बढ़ेगा। इसलिए ये मार्जिन्स भी गोइंग फॉरवर्ड सस्टेनेबल है। ओके। एंड सर, जैसे यस Just a quick one. Gaurav, what 2015-16 में हमारा top line was 103 crores. At that time, our dependability on mobile phones and e-commerce was 100%. So ऐसा नहीं है कि हमारा top line ऊपर नहीं गया या नीचे गया. हमारा हमेशा focus profitability में रहा है. And over the years हम लोगों ने इतना experience और इतना categories हमने किया है that we now understand the whole total formula, and our total concept and our total focus is to make money and to be profitable, and since day one we've been profitable in this line of business.
थैंक यू सर। एंड सर जैसे आपकी जो टॉप कस्टमर देख रहा था उसमें दो एंटिटी रॉक डील के नाम से, तो गोइंग फॉरवर्ड दैट एंटिटी वुड कंटिन्यू बी, और दे आर लाइक एक्सटर्नल पार्टी हु बिकम टॉप कस्टमर फॉर यू? गोइंग फॉरवर्ड टॉप कस्टमर में हमारी ग्रुप कंपनीज का रेशो रहेगा, बट हम और डीपर पेनिट्रेशंस कर रहे हैं, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, कर्नाटका में कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट पार्टीज को भी सेल कर रहे हैं, तो ओवर द पीरियड वो कम डाउन होगा, बट स्टिल रॉकिंग डील्स कंटिन्यूज टू बी ए मेजर कस्टमर फॉर अस। एंड सर जैसे आपकी फंडिंग रेज होगी उसके बाद आपका डेट कांस्टेंट रहेगा, और यू आर प्लानिंग टू लाइक रिड्यूस डेट और लाइक ग्रो स्लाइटली मोर एंड इंक्रीज साइज बाय टेकिंग मोर डेट? अभी के लिए डेट कांस्टेंट रहेगा, नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स की हमारी ग्रोथ के लिए जो हमें आईपीओ का पैसा है वही लगेगा, और अभी के लिए ना रीपे करने का इंटेंशन है ना एक्स्ट्रा डेट लेने का इंटेंशन। ओके सर। ऑलराइट, तो फाइनेंशियल के बाद हम लोग थोड़ा कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। तो सर, युवराज सर, जैसे आपने बताया कि यू आर वन ऑफ द पायोनियर्स एंड आई गेस द बिगेस्ट प्लेयर, राइट? बट आप कोई कंपटीशन अभी देख रहे हैं, या इन फ्यूचर आर यू सेंसिंग एनी कंपटीशन जो कि आगे जाके लाइक एक बड़ी चुनौती दे सके? यू आर ऑन म्यूट सर। Apologies. या Don't sense, we don't see any competition. There's no India में कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो इसको efficiently और professionally मैनेज कर रहा है, एंड ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसके पास हम जैसा एक्सपीरियंस हो. So over the years हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है, and we don't see any competition coming in. We had earlier seen some it's very easy, लोग बोलते हैं कि कोई $1 trillion कंपनी आ जाएगी या कोई बहुत बड़ी कंपनी आ जाएगी with a big cash flow जो आके कर सकती है काम. So earlier there were two companies who tried doing this, who were global names in terms of distribution and technology, but they could not survive in India and they shut their businesses and they're out. So this business is very, you have to be constantly growing in this business. You cannot be dependent on one category. You cannot be dependent on one brand. You cannot be dependent on one, way to sell as well. You have to try each and every formula. And then after all of that, when you understand the whole game flow, that is when you have to expand and then take it to a different level. गॉट इट। तो सर जैसे आपने डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट सेगमेंट ट्राई करके, आई गेस नाउ यू हैव द सक्सेस फॉर्मूला, राइट? नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ वो कहाँ से आएगा? Next phase of growth, we're looking at East India. We're getting a lot of traction from there. We're getting into a few new contracts with brands which are going to be exclusive. वहाँ से काफी अच्छा हमारे को ट्रैक्शन दिख रहा है, काफी अच्छा बिजनेस हमें दिख रहा है. एंड अभी तो India is massive. I mean, we are talking about this circular economy. India now is a $4 trillion economy, right? Circular economy globally right now is $2.45 trillion. वाओ। So India तो अभी बहुत ही it's अभी तो we're not even a egg actually, अभी तो chicken बाहर आएगा. So only part of re-commerce and excess inventory is about $60 billion in India, which is a very fair, very small number. Abhi to there's a lot to do. There's so much in the country. And the best part about India is aspiration to get branded products at the right price. It's the biggest key and the biggest goal achiever for us. So we're seeing a lot of traction, a lot of traction. डेफिनेटली। सो या इंडिया की ग्रोथ के साथ साथ ये सेक्टर के लिए भी ग्रोथ आएगा। सर, आपके बिजनेस के लिए रिस्क क्या है? आर देयर एनी रेगुलेटरी रिस्क या कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट? आई डोंट थिंक इतना ज्यादा होगा, बट उसके We're अराउंड locally कुछ रिस्क है? procured from या India, so ऐसा कोई risk नहीं है. The only risk that we see is counterfeit products जो लोग बेचते हैं, राइट। which is spoiling the business, because we see a lot of those videos. People are showcasing inventory with prices, and they are fooling people. We can't. We are doing a drive where we're telling people, please, anything and everything which is at a great price,
should be either excess or a certified refurbished product. It cannot be anything else. Because you cannot fight with the brand, right? Point one. Point two, customer mindset is also one thing. It takes time, which we've learned and we've earned. हमने learn भी किया और हमने earn भी किया है over the years that customer trust is something that we need to build up, because हम लोग कभी भी देखते हैं कोई प्रोडक्ट बड़े सस्ता दिख रहा होता है हमें कहीं पे, तो हमें लगता है कि फेक है, and we don't trust that brand even though it's वो original होता है, brand contract or tie-up होता है काफी लोगों का. So that is also one thing that we are building up, and we don't see that much in the coming time, because the way we are going to grow and the way we are growing, the trust factor will also come in. So I don't see much Okay, risk. great, sir. Yeah, thanks for explaining that. Sir, before we close, any message that you want to leave for the potential shareholders? Look, the message is very clean and clear and very simple. Globally, circular economy is massive. We talk about sustainability. Any big brand globally is running after sustainability. It's running after, वो सब चाह रहे हैं कि उनका कस्टमर रिटेन हो, वो सब चाह रहे हैं कि उनका जो pre-owned product है उसका भी market हो. So a lot of brands are doing that. And जो कंपनियां सिर्फ e-commerce कर रही हैं, there's a company called Poshmark. It is worth $7 billion post the IPO. That's just one of the companies. Billions of dollars is not a number there. And they're just doing e-commerce and only for a few brands. So this overall is a very, this is the most important economy changer or a business changer in the coming time. And we are the only brand in India doing this professionally, ethically, and for a very long time, making profits and doing it, keeping our customers, employees, and everyone happy, and doing it the right way. Even the brands are very happy. So we are getting into bigger and better contracts. So first of all, the category, the business is the future. Number two, there's nobody as old and as professionals or as experienced like us. It's the future for the economy. So that is it. I mean, that's my message to everyone. And I would say it's a pleasure to be here, and thank you so much for having us here.